Hello, this is Megha Chaudhary from Northeastern Chronicle, and today we'll be talking about. Yes, you saw it right. We all know how cases of rape has been rising up, and it seems like the fight for women empowerment and safety is a long one. But one of the biggest problem in tackling this problem is the accusations of fake molestation and rape cases. Take this recent video as an example, which went viral on social media, where a Zomato delivery guy was accused of punching a woman, but in response he denied all the allegations and stated that the woman was the one who herself punched her in the nose with the ring. Now we don't know what the truth is. Not just this, but there are a lot of other cases similar to this where we have seen men losing their jobs and getting arrested for years due to such false allegations. Let's check out what people of Guwahati has to say about this. So we have seen a lot of cases where women have falsely accused men for molestation or rape cases, right? So, what can be done and what are your opinions on this? First of all, I think that every minute as we speak, a woman is raped or she is harassed or she is molested all over India. There is no denying of the fact that every day the number of such incidents is increasing. But at the same time, what's more concerning is that there are particularly few women who, under the name of feminism or under using rape or molestation as a pretext, what they do is that they falsely accuse men. हाँ, वो तो मतलब आजकल तो लड़कियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ लड़की को ही मतलब वो उनको ही हम लोग अगर मतलब मानते चले तो ऐसा नहीं, क्योंकि लड़की लोग भी आजकल काफ़ी वो हो रहे हैं और वो लोग अगर चांस ना दे तो लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि लड़का लोग हमेशा चांस ढूंढते हैं। तो जब तक उनको चांस नहीं मिलता है लड़का लोग कुछ भी नहीं कर पाता है, पर हम लड़कियाँ चांस देते हैं उनको। You all must have seen that case where this woman has accused this man who has come to her house and punched her, like the Zomato delivery case. So what are your opinion on this? First of all, we don't have the right to give justice to anyone. So আমি ফাৰ্ষ্টতে তেওঁলোকৰ জাষ্টিছ আমি আমাৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা বা তেওঁলোকক জাষ্টিছটো দিব, তেওঁলোকৰ ভুল কাৰ আছিলে, কাৰ কি আছিলে বা কোনে দোষ কৰিছিলে সেইটো পুলিচে নিজৰ ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকে চাই মেলি আমাক জনাব, আৰু তাৰপিছত আমাৰ অপিনিয়নটো দিয়া ভাল। কোনোবা এটা আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট এটা পাই বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' এটা পাই যে আমি ডাইৰেক্ট অপিনিয়নটো দিব যাম, মোৰ নিজৰ অপিনিয়ন, সেইটো বেয়া নহয়। আমি দুটা চাইডৰ অপিনিয়নটো ল'ব লাগিব, তাৰপিছত যে কোনটো ভাল বা কোনটো হয় সঁচা হয় বা কোনজনে মিছা কৈছে সেইটো জাষ্টিফাই হোৱাৰ পিছত আমাৰ নিজৰ অপিনিয়নটো দিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। I am not telling that the delivery guy was correct or the woman was wrong, because right now we don't know what's the correct, like the judgment, because the results haven't come out. But what I fairly think is that yes, the perpetrators of violence against women should be punished, but at the same time, especially to our children, we should tell them that it's not ethical to use the pretext of rape or the excuse of rape to falsely victimize a man or portray him as a rapist, because all it does is it just damages this phenomenon of feminism, and it brings a bad name to this overall thing. ডেলিভাৰী বয়জনে যেনেকৈ কৈছে যে তেখেতে মানে যোনজন গ্ৰাহক তেখেতক ফ্ৰী নিদিয়াৰ কাৰণে, দেৰি হোৱাৰ কাৰণে, ফ্ৰী লগাৰ কাৰণে নিদিয়াৰ কাৰণে তেখেতক প্ৰহাৰ কৰিছে, যিটো একেবাৰে মই ভাবোঁ নিন্দনীয়। এজ এ চিটিজেন বা ময়ো কেতিয়াবা যদি বস্তু কিনো তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হ'লে হয়তো তেওঁৰ ঠাইত যদি মই হ'লোঁ হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো নকৰিলোহেঁতেন। তো এইটো মই ভাবোঁ ইটছ ছেম। And like, what do you think nowadays? Do women take advantage of their gender? And they take advantage of their gender. They take about pseudo feminism, right? Yeah, they take advantage of it. They misuse their power, their rights. So it is really like unfair for the men. Like the man struggles a lot because of the false accusations. और ये सब रेप केसेस वो वगैरह, इनमें भी मतलब कुछ ना कुछ करके आपका लड़की का ही, पहले तो लड़की का ही हाथ है तभी लड़का आएगा, क्योंकि अगर लड़की लोग कुछ नहीं करेगा तो उनको भी चांस नहीं मिलेगा ना। वुमेन्स को थोड़ा मतलब अपने आप को दिखाना चाहिए, और जैसे जेंडर का बात हुआ तो ज़्यादातर वुमेन्स अपने जेंडर का गलत मिसयूज़ तो कर ही रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके साथ ही गलत हो रहा है। तो मेरा ऐसा लगता है कि जिनके साथ गलत हो रहा है वो अपने आप को स्टैंड लेना चाहिए, अपने मतलब अब ऐसा
नहीं है कि वो गर्ल्स हैं, तो सिर्फ गर्ल्स मतलब पीछे ना रहें, आगे बढ़ें, अपने लिए स्टैंड लें. When a woman threatens someone with a fake rape charge, doesn't it mean that she is taking an undue advantage of her gender and compromising the safety of thousand others? No doubt, reports of rape should be treated with more caution since men's lives are so often ruined with women's false lies. Put down your opinion down below the comment box and let us know what you think about it. That's all for today. Stay tuned to Northeastern Chronicles for more such content.